Monica, Yedant, and Zoya are in partnership, sharing profits and losses equally. Zoya died on 30th June 2018. The balance sheet of the firm as at 31st March 2018 stood as follows. अभी यहीं पे हमको एक क्लियर कट बात पता चल रहा है दैट द पार्टनर died on 30th June. Balance sheet was on 31st March. So April, May, June. ये 3 महीना पार्टनर बिजनेस में था. तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट कैलकुलेशन का एडजस्टमेंट पक्का आने वाला है. दैट इज फॉर कंफर्म. Creditors, general reserve, capital account, Monica, Yedant, Zoya, land and building, investment, stock in trade, trade receivables, less provision for doubtful debts, cash in hand, cash at bank. In order to arrive the balance due to Zoya, it was mutually agreed that the land and building to be valued at 1,75,000. Debtors were all good, no provision is required. Stock is valued at 13,500. Goodwill valued at 1 year's purchase of average profit of past 5 years. Zoya's share of goodwill to be adjusted in account of Monica and Yadan. Zoya share from 1st April, profit from 1st April 18 to the date of death to be calculated on the basis of average profit of preceding 3 years. The profits for preceding 5 years are as follows. 25,000, 20,000, 22,500, 28,750. You are required to prepare revaluation account, capital account, balance sheet of the firm as at 1st July 2018. So, revaluation account, partners capital account, Monica, Yedhan, Zoya. Bank account, balance sheet, after death on 1st July 2018. So, old balance sheet to new balance sheet, creditors, $20,000. General reserve will distribute later on. Capital account will go to capital account by balance brought down. Monica, 1 lakh, 75,000, 75,000. Asset side जाते हैं. Land and building, 1,50,000. Investments, 65,000. Stock in trade, 15,000. Trade receivables, 35,000. Less provision for bad debts, that is old RDD. ओल्ड आरडीडी अपने को दिया है 2000. फिर
कैश इन हैंड जैसे है वैसे लिख देंगे. Cash at bank will go to bank account. Okay. Distribute accumulated profit. It is there by general reserves. 12,000 divided equally. फिर accumulated loss नहीं है. Deal with adjustment. In order to arrive at the balance due to Zoya, it was mutually agreed that land and building valued at 1,75,000. तो नया वैल्यू है 1,75,000. पुराना वैल्यू था 1,50,000. So we got 125,000 as profit. तो इधर आ जाएगा बाय land and building 25,000. फिर debtors were all good, no provision is required. So new RDD is 0. तो outer column में same 35,000 आ गया. Either 0, nothing to be written over there. So NRDD is not required. NRDD is 0 minus 2,000. So we have got negative 2,000 rupees. Excess RDD credit side में जाएगा by excess RDD 2,000. Stock is valued at 13,500. स्टॉक का नया वैल्यू 13,500 है. पुराना वैल्यू 15,000 था. तो 1,500 कम हो गया. लेस रीवैल्यूएशन और इधर एड एसेट का वैल्यू कम हो गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड टू स्टॉक 1,500. Goodwill will be valued at 1 year's purchase of the average profit of 5 years. तो पहले तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं. एवरेज प्रॉफिट आप निकालो. 25,000 plus 20,000 plus 22,500 plus 35,000 plus 28,750 upon 5. I got 26,250. Do you get that? 26,250. Goodwill is valued at 1 year's purchase. So therefore, Zoya's share is equal to 26,250 upon 3, 8,750. Right. तो अभी it is to be adjusted. Goodwill adjusted मतलब क्या एंट्री आएगा? Continuing partner debited to retiring partner. That means
M debited, Y debited to Z. अभी इसका 8750 है and it would be in the gain ratio. अगर न्यू रेशियो हमको दिया नहीं, मतलब gain ratio is equal to old ratio, which is equal. So 8000 का 4000 and 750 का 375. 4375 4375. Is that okay? कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू जोयास कैपिटल अकाउंट 4375 जोया में 0 एंड क्रेडिट साइड में बाय मोनिका's कैपिटल बाय येदांश कैपिटल और जोया के कॉलम में 4375 Zoya's share of profit, working note number 3. Zoya's share of profit to be calculated on the basis of average profit of preceding 3 years. तो हम लोग उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं प्रेसिडिंग 3 years 22,500 plus 35,000 plus 28,750 upon 3. I got 28,750 average मिला. Therefore, Zoya's share is equal to 28,750 multiplied by 1 upon 3. उसका share multiplied by Zoya was there in the business up to June. So April, May, June. So into 3 upon 12. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। So I got is 2,395. उतना आ रहा है क्या चेक करो। हमने गलत किया है, गलत किया है। क्या गलत है बताओ। लास्ट 3 years कंसीडर करना है, हमने अर्लियर 3 years कंसीडर कर दिया है, तो वो गलत है। इक्वल टू लास्ट 3 years का है 25,000 प्लस
20,000 plus 22,500 upon 3, ये एवरेज है 22,500. I got 1875. अभी मिला. तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 1875 एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिख देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट 1875. Now all adjustments are over. Let us go ahead for closing the account. पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे तो हमको वहां पे प्रॉफिट मिला. वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. By revaluation account, everyone is getting 8,500. वो इधर ले लिया. अभी हमको सबसे पहले एक्सपायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस हमको मिला 98,125. तो वो एग्जीक्यूटर लोन करके हमने डाल दिया. फिर बाकी पार्टनर को क्लोज करके उनका अकाउंट कैपिटल में ले लिया तो वो बैलेंस शीट में गया. So you can see the balance has been taken up to the outer column. बैंक अकाउंट का बैलेंस उधर अपने आप चला गया. अभी बैलेंस शीट को टैली करने के लिए इनर कॉलम के अमाउंट हम आउटर कॉलम में लाएंगे. You can see our balance sheet tallies at 3,09,375. Is that okay with all of you? Okay. Fourth problem देखते हैं हम लोग. Arup and Swarup were partners. The partnership deed provides inter alia that the annual accounts to be balanced on 31st December each year, that the profits are allocated as follows. Arup 1/2, Swarup 1/2 and carried to reserve account 1/6. So 3:2 is the profit sharing ratio. That in the event of death of partner, his executor will be entitled for the following: capital to the credit at the death, his proportionate share of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years, his share of goodwill based on 3 years purchase of average profits of the 3 preceding completed years, Arup's capital, Swarup's capital, reserves, bills receivable, investment, cash, trade payables. The profit for 3 years were 51,000, 39,000, 45,000. Show the calculation of Swarup. Draw Swarup's account for executor. एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा था. मैं रफली आपको इसका सॉल्व करके बताता हूं.
स्वरूप डाइड है, तो ध्यान से देखो, व्हाट आई नीड टू टेल यू। ओके, कैपिटल बैलेंस, उसका कैपिटल बैलेंस कितना था स्वरूप का? 60,000। एड रिजर्व्स, कितना था रिजर्व्स का? टोटल 45,000 और उनका रेशियो 3:2 था, तो 2/5, 18,000 उसको रिजर्व्स का मिलेगा। फिर अभी ये हो गया 78,000। अभी उसको उसका गुडविल का पैसा मिलेगा। सिंपल है, आई टेल यू, देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? His proportionate share of goodwill based on average profit of preceding 3 completed years. So 51,000 plus 39,000 plus 45,000, 1,35,000 divided by 3, 45,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो उसको गुडविल का भी 18,000 मिलेगा। फिर तो ये अभी हो गया उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। His proportionate share of profit to the date of death based on the profits of previous 3 completed years. तो हमको 45,000 उनका एवरेज प्रॉफिट मिला था, इनटू 2/5, 18,000, into he was Swarup died on 1st May, so the partner was there in the business from Jan to April, so into 4 divided by 12 कर दो, 6,000 into 4 divided by 12 कर दो, 6,000। गुडविल का अमाउंट शायद हमने गलत लिया है, चेक करो। हमने गुडविल पूरे फर्म का, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट 45,000 है, गुडविल वाज मल्टीप्लाइड बाय 3, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 2 divided by 5, तो ये 54,000 आएगा। 1,32,000 plus 6,000, 1,38,000। तो आप देखो, दिस इज द सॉल्यूशन। अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर, अगर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, बाय जनरल रिजर्व्स 18,000, बाय गुडविल 54,000, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 6,000, टू executors loan account 1,38,000। That's it, सिंपल है। विल यू सॉल्व इट एट होम? मैंने रफ सॉल्यूशन बता के रखा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसका लेजर अकाउंट बनाने का काम आपका रहेगा।
सो जो 4 प्रॉब्लम्स आपको दिए थे चारों सॉल्व करके हो गए. एंड एट द बिगिनिंग इटसेल्फ आई सेड कि जितना टाइम ये चार प्रॉब्लम्स के लिए लगने वाला उतना टाइम लेक्चर चलेगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एमसीक्यू का शीट सेंड करने वाला हूँ विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज ये 4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया. उसके अंदर आपको कोई डाउट है क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने अमाउंट डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखे हुए हैं. डिटेल्ड सॉल्यूशन वर्किंग के साथ आप लोग करोगे. Okay, so no doubts. Let us conclude with the session today. इसके और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ एडिशनल एमसीक्यूज मैं आपको सेंड करूंगा. उसको हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. ओके, सो नो डाउट अप टू दिस पार्ट. शैल वी कंक्लूड? कुछ अलग अलग बुक्स में से प्रैक्टिस करते रहो आप लोग घर पे भी. ओके, concluding up with my session for today. That's all. Bye. Enjoy. Take care.